यशोदानंदन व्रजजान रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय शील प्रभुपाद जय गौर हरि बोल गौर हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय ओम पाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शतस्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की समवेत गौर भक्त वृंद की आई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय 20 श्लोक संख्या 20। नाभ्याम स्थितम हृदि अधिरोप्य तस्मात् उदान गत्य उरसी तम तम नयेत मुनिः ततः अनुसंधाय धिया मनस्वी स्वता स्वतालुमूलम शनकैः नयेत। नाभ्यां स्थितं हृत्यधिरोप्य तस्माद् उदानगत्योरसितं नयन्मुनि ततोऽनु मनस्वी स्वतालुमूलं शनकैर्नयेत। नाभ्यां स्थितं हृत्यधिरोप्य तस्माद् उदानगत्योरसितं नयन्मुनि ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं शनकैर्नयेत। नाभ्यां स्थितं हृत्यधिरोप्य तस्माद् उदानगत्योरसितं नयन्मुनिः ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं शनकैर्नयेत। नाभ्यां स्थितं हृत्यधिरोप्य तस्मात् उदानगत्योरसितं नयन्मुनि ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं शनकैर्नयेत। नाभ्यां स्थितं हृत्यधिरोप्य तस्मात् उदानगत्योरसितं नयन्मुनि ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं शनकैर्नयेत। नाभ्यां नाभि में स्थितम स्थित हृदय हृदय में अधिरोप्य रखकर तस्मात वहां से उदान उदान ऊपर उठाते हुए गत्य वेग से उरसी छाती पर तम तत्पश्चात नयेत ले जाए मुनि ही ध्यानवान भक्त ततः उनको अनुसंधाय अन्वेषण करने हेतु धिया बुद्धि से मनस्वी ध्यानशील स्वतालु मूलम तालु के निचले भाग में शरकई ही धीरे धीरे नयेत ले जाए। तो भाषांतर तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इनके द्वारा ध्यान मग्न भक्त
को चाहिए कि वह प्राणवायु को धीरे धीरे नाभि से हृदय में, हृदय से छाती में और वहां से तालू के निचले भाग तक ले जाए। उसे बुद्धि से समुचित स्थानों को ढूंढ निकालना चाहिए। तात्पर्य, वायु की गति के 6 चक्र होते हैं और बुद्धिमान भक्ति योगी को चाहिए कि बुद्धि तथा ध्यान लगाकर इन स्थानों को खोज निकाले। इनमें से उसके पूर्व जिस चक्र का उल्लेख है वह स्वाधिष्ठान चक्र या प्राणवायु का शक्ति आगार है, और इसके ऊपर नाभि के नीचे मणिपूरक चक्र है। जब हृदय में ऊपरी स्थान का अन्वेषण किया जाता है तो अनाहत चक्र मिलता है, और इससे भी ऊपर जब प्राणवायु को तालु मूल पर स्थिर किया जाता है तो विशुद्धि चक्र मिलता है। ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आराध्य भगवान् वर्जेशतनया तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचित् उपासना व्रजवधूं वर्गेण वा कल्पितः। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादराणापरः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाभ्यां स्थितं हृदय धीरोऽप्य तस्मात् उदारगत्यो रसितं नयेन्मुनि। ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं शनकैर्नयेत्। ध्यानमग्न भक्त को चाहिए कि वह प्राणवायु को धीरे धीरे नाभि से हृदय में, हृदय से छाती में और वहां से तालु के निचले भाग तक ले जाए। उसे बुद्धि से समुचित स्थानों को ढूंढ निकालना चाहिए। हरे कृष्णा। यहाँ पर हम रिकैप की जो प्रगत योगी है, अष्टांग योगी, उसके बारे में, उसका जो धारणा और ध्यान के बाद किस तरह से वो मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि वर्णन हुआ है यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी
के सामने परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न किया था कि एक मृत या मरने वाला जो व्यक्ति है उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए, उसने क्या करना चाहिए, मगर सामने बैठने वाले जो मुनि लोग हैं उनमें से हर कोई शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं है। हो सकता है कोई ज्ञानी है, कोई अष्टांग योगी है। तो उन सबकी शंकाओं का निरसन करते हुए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी अष्टांग योग पद्धति के द्वारा मुक्ति का मार्ग कैसे प्रशस्त होता है उसका विश्लेषण कर रहे हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये जो आसक्त योगी है या निरासक्त सबके लिए लागू होता है, मगर प्रत्याहार के समय जो आसक्त योगी होता है उसके लिए जो धारणा का विषय है, धारणा आश्रय जो है वो विराट रूप है, और उसके आगे फिर वो जाके क्रम मुक्ति के द्वारा अंततः वो भगवत धाम या मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है। और जो निरासक्त योगी है, जो प्रत्याहार के स्तर पर बिल्कुल भौतिक कामनाएं, इच्छाएं बिल्कुल नहीं है, ऐसा जो निरासक्त योगी है उसका धारणाश्रय जो रहता है हृदय में स्थित परमात्मा, इसके ऊपर वो धारणा करता है। और इसका विश्लेषण तो और अ, कपिल मुनि देते हैं थर्ड कैंटो में, किस तरह से वो धारणा करता है। तो इस परमात्मा का ध्यान धारणा के बाद ध्यान अवस्था में जाकर समाधि की अवस्था में के उपरांत किस तरह से मुक्ति पाता है, किस तरह से अपने षट चक्र योग की पद्धति के द्वारा वो अपने प्राण वायु के किस तरह से 7 चक्रों से आगे आगे ऊपर ऊपर उठाकर अंततः ब्रह्मरंध्र से वो प्राण वायु को मार्ग देकर किस तरह से वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचता है, इसका वर्णन अभी ये श्लोक में हो रहा है। ये जो 3 श्लोक है, 19वां, 20 और 21, ये 3 श्लोक इसके बारे में चर्चा करते हैं। कल षट चक्र योग के बारे में चर्चा हुआ, कुछ ऐसा कुछ नहीं, तो मैं उस विषय को ही ले लेता हूँ। षट चक्र योग पद्धति है क्या या कुंडलिनी या कुंडलिनी जागरूक करना, ये क्या पद्धतियां हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जो ये मैंने सुना है। तो प्रभुपाद जो बोलते हैं ये जो कुंडलिनी जागरूक करना, षट चक्र योग जो भी है, इसको वो एक मैकेनिकल योगा सिस्टम ही बोलते हैं। ऑल्दो द मॉडर्न कुंडलिनी योगा सिस्टम उसको स्पिरिचुअल नाम देते हैं, आध्यात्मिक है करके। मगर उनका हेतु क्या है वो डिसाइड करता है कि वो आध्यात्मिक है या भौतिक है। तो जनरली प्रभुपाद बोलते हैं कि आजकल जो कुंडलिनी योगा जो भी प्रैक्टिस करते हैं उसमें ज्यादातर वो मैकेनिकल योगा सिस्टम है, षट चक्र कुंडलिनी, जिसमें मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक 7 जो चक्र है उसके ऊपर धारणा होती है, ध्यान होता है और उनको जागरूक करने की चेष्टा होती है। तो इसका एक विश्लेषण हम थोड़ा चर्चा करेंगे इसके ऊपर। कुंडलिनी
योगा के बारे में। तो कुंडलिनी ये शब्द ही बताता है कि जो सर्प रहता है कुंडली मार के जैसे बैठता है, कब मारता है? जो वो सोता है, आराम रहता है, उसका शक्ति जो है अभी प्रदर्शित नहीं हुआ है, सुप्तावस्था बोलते हैं उसको। जब अ, जीव सुप्तावस्था में है, अभी तक उन्होंने अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत नहीं किया है, उस अवस्था को कुंडलिनी अवस्था बोलते हैं। और कुंडलिनी योगा जो रहता है, अम, इस पद्धति से उस कुंडलिनी जो जागृत शक्ति है, अम, अ, जो सोई हुई शक्ति है, उसको जागृत करते हैं, अवेकनिंग कुंडलिनी शक्ति। तो कुंडलिनी इसका मतलब ही है जैसे कॉइल्ड, जैसे कि स्प्रिंग भी रहता है ना। हमारे पहले ऐसे वॉच रहते थे जिसमें वो ट्र 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 ट्र, फिर वो स्टोर्ड एनर्जी बोलते थे उसमें। हम्म, तो वो मैनिफेस्ट होती है, धीरे 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 यूटिलाइज होती है। तो कुंडलिनी योगा जो है, इट इज प्रैक्टिस टू एक्टिवेट दैट एनर्जी, allow it to move up through the seven chakra, through spinal, which are lying along with the spinal cord from the Muladhar till Agya chakra. तो मॉडर्न डेफिनेशन जो है ये कुंडलिनी के चक्र के, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। नथिंग इज मॉडर्न, दे हैव टेकन इट फ्रॉम वैदिक साइंस। तो ये सबसे पहले तो ये 7 चक्र जो रहते हैं, वो 7 चक्र सबसे, जो गुदद्वार, एनस, गुदद्वार के ऊपर जो 7 चक्र इट इज मेंशन टोटल। आई विल मेंशन ऑल 7। उसमें एक्चुअली एक एक चक्र नहीं है, उसको रंध्र बोल सकते, ब्रह्म रंध्र टॉप। मगर 6 चक्र as per the what is mentioned here in Srimad Bhagavatam. One by one we will go through those chakra. Basically कुंडलिनी योगा सिस्टम में लास्ट जो ब्रह्म द्वार रंध्र रहता है उसको भी क्राउन चक्र, ब्रह्म चक्र बोलते हैं, जो ऊपर है। तो वो तो एक that is just puncturing the basically cerebral, हाँ हाँ, मगर उसको जागरूक करना, पंचरिंग करना, उसको भी एक चक्र का स्थान दिया है उन्होंने। 6+1, 7 places। तो कुंडली एनर्जी it is said that it rises and it believed to help balance these chakras and contribute to the spiritual wellness। तो सबसे मूलाधार के ऊपर जो चक्र रहता है उसको मूलाधार, मूल का आधार के लेकर जो रहता है, ये जो मूलाधार चक्र है, इट इज द सेंटर फाउंड एट द पेल्विक फ्लोर। एंड मूलाधार चक्र को बोला बोला जाता है कि ये हमारा पृथ्वी का आधार है, ये पृथ्वी का आधार लेता है, मूला आधार। एंड इट कीप्स अस ग्राउंडेड इनटू आवर embodied reality। It When the Muladhara chakra is awakened, then one becomes physically strong and secure because it derives the energy from the earth. It is Aadhar is earth. It holds our instinctual urges। ये मूलाधार अर्थ में चक्र में क्या क्या अर्जेस रहते हैं, जैसे कि अर्ज फॉर ईटिंग,
food, sleep, nidra, sex life, mm, and our survival itself. ये इसका ये मूल है मूलाधार चक्र पे. It is also the realm of our avoidances and fears. Importantly, Muladhar holds our most powerful latent potential. That means कुंडलिनी शक्ति का वो वो सुप्त अवस्था में वो मूलाधार चक्र में पहले होता है और उसको यहाँ पे जैसे कि प्राणवायु is raised from the Muladhara chakra to Swadhisthana chakra, and then up. Similarly, the Shakti is stored in first Muladhara, and through the Kundalini Yoga system, what they do, or what they intend to do, is to reawaken that Shakti within, and raise it up and up. As the consciousness goes up and up, it becomes more subtle and subtle and subtle and subtle. It is very gross at the down. All gross desires center is Muladhara. As it goes up, it becomes more subtle and more spiritual. It gets free from the gross elements, and finally ether, and then it goes Agya chakra, and then it goes. That soul completely gets purified from all the impurities of the gross and subtle. As the soul or the consciousness raises, मूलाधार चक्र पे ही जिसका सारा शक्ति अभी है और बाकी के चक्र नहीं अभी तक एनर्जाइज हुए हैं. They are on Annamaya Kosha only, always thinking of food, sleep, and sex. Ahar, Nidra, Bhaya, Maithun. Literally, these are the things. Ahar, Bhaya, Maithun, ये सारी क्रिया मूलाधार चक्र के ऊपर ही चलता रहता है. तो when the yogi raises his consciousness from the मूलाधार चक्र तो स्वाधिष्ठान चक्र, स्व अधिष्ठान. क्या है स्वाधिष्ठान? It is our water center, earth, water, fire, air. This is a water center, home of reproductive organs and our desires. When our consciousness moves freely through this area, we access our potential for self-healing and sensual pleasure. When this chakra remains asleep to our consciousness, we may be ruled by our attachments, asakti. Similar to the Muladhara chakra, okay. So they have also mentioned different yoga asana paddhatis which help to rejuvenate and awaken the different chakra. That's why Prabhupada mentioned these are all yoga paddhatis to awaken the chakra. They are mechanical yoga paddhatis. Those solutions are also given by them. Which are the yoga helps to awaken which chakra? So Swadhisthana chakra, it is our. The next chakra comes navel chakra, they call Manipuraka chakra. So Manipurak, located at the navel. And this is a third of the 7 chakra. So it is associated with the fire element, digestive fire, digestive system. Whole our digestive system actually root is navel. हमारा नाभि ठीक होना चाहिए, इसलिए वो बोलते हैं ना नाभि सेट करना पड़ता है. अगर नाभि सेट नहीं है किसका, कितना भी दवाई ले लो, अब डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं इंप्रूव होगा. बहुत कुछ करते रहते हैं मगर नाभि ये अपनी जगह पे नहीं रहता. तो एलिमेंट ऑफ द फायर and individual
power and purpose. Think of Manipur as your body's energy powerhouse, as it holds a vast amount of our physical vitality. Nabi chakra. For a good health, the Nabi chakra need to be properly awakened. When this area is blocked, we may experience imbalance associated with aggressive ambition, uh, egoistic behavior, pursuit of personal power, and etc. etc. So these are all because of the imbalance of the navel मणिपुर का चक्र. बाद में नेक्स्ट लेवल ऊपरी स्थान होता है चेस्ट पे अनाहत चक्र, हृदय. इट इज related to your lungs, heart, anahat chakra. At the center of the chest, the heart chakra also usko bolte hain. This is the most powerful center of all, the seat of the soul. हृदय में स्थित है आत्मा, सबसे महत्वपूर्ण यह स्थान है. Associated with lungs and the element of air. फायर के बाद एयर एलिमेंट. What? We can imagine the heart as the meeting ground for the vast spectrum of our human emotional experience. The heart has the capacity to radiate the highest aspect of the human being, like compassion and all those feelings. The originates from the heart, daya, daya, but unconditional love, and Shraddha in the divine, in the Lord. All those feeling for the Lord, bhakti, my feelings. It's a seat of, it arises from, because it is nature of soul. It arises from here. Why? Because soul resides there. And these are the main functions of the soul. But it is also has the capacity to radiate our deepest feeling of insecurity, disappointment, loneliness, despair, all those feelings. On the contrary, when this chakra is not properly awakened. Okay. तो इसके लिए भी प्राणायाम की पद्धति बताई गई है. अभी तक जो भी चक्र थे उनको जागृत करने के लिए अलग अलग योगासना बताए गए हैं. इसके आगे जो अनाहत चक्र है उसको जागृत करने के लिए प्राणायाम की पद्धति बताई गई है योगा सिस्टम में. Now next comes Vishuddha chakra, which is at the root of the palate or throat. Vishuddha chakra. Vishuddha, Shuddha. It's related to ether, sound. The fifth of the seven chakra, Vishuddha chakra, is associated with the element ether, and it is the energetic home of speech and hearing, and the endocrine glands, and that controls the metabolism. On a spiritual level, this chakra is all about expanding our conversation with the divine. Chakra, the sound vibration, mantra meditation, that sound about the divine, and by that the chakra is awakened by divine sound vibration. To heal and purify the throat, we can work with the chant of different mantras. They are given different. So Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. All chakras are purified. And third, okay, the final sixth chakra is Ajna chakra. Ajna यानी instruction, है ना, आज्ञा देने वाला.
It is in between the two eyebrow here. Ila Nadi, all the nadis sanyom happens here. Hmm? And mind also functions at that point. The last of the seven chakra. Okay. Second last is Ajna chakra. This is a command center. Is located eyebrow level, midbrain. It is the meeting point of the two important energetic stream in the body. Ila Nadi and Pingala Nadi. Ida and Pingala Nadi. And to purify this Ida and Pingala Nadi, there is Anulom and Pratilom Pranayam is done. Not just for the physical health purpose, but to purify these nadis, Ila Nadi and Pingala Nadi, the pranayam of Anulom, Pratilom, that kind of pranayam is a place where the mind and the body converge. This is the place. Physically, it is connected to a pituitary gland, growth and development. When relaxed consciousness flows here, we have more intuition and inner knowing and a feeling that we are much more than a physical body. That means we are not body, we are soul. When these nadis are awakened, that helps and that helps to awaken our spiritual consciousness. That is what they raising the chakra. To heal and purify this center, we can practice alternate nostril breathing. That means Nadi Shodhanam, same Anulom and Pratilom is for Nadi Shodhanam only. That's why the yogis, they focus on this center while meditating. Okay, to purify these nadis. And the top is a crown chakra, Brahma Randhra. This is the last seventh chakra, crown chakra, in which links us everything that is beyond our individual ego. That means it is beyond earth, water, fire, air, ether, and beyond ego. It is everything that lies beyond our inner intellect and personal need, performance, emotions. So this is the center for spiritual enlightenment. And through that, this center, the Ashtanga Yogi raises the prana vayu, and that prana vayu finally merges into the divine, whatever his destination after liberation. That may be Brahman realization, impersonal realization, or entering into the spiritual planet, what the yogi desires as per his level of consciousness, what he has developed during his sadhana. What is sadhya? That sadhya he attains as per his desire. He can control. And at that time, he controls all other 6 holes. Sorry, 9 holes are there, but especially he controls all other holes. He blocks all the holes and allow the soul only to so puncture to the cerebral Brahmarandra, and thus the yogi enters into the spiritual realm. That's the way the liberation is explained. Now, Prabhupada mentions those people, those who leave their body, soul leaves their, generally the people, whenever they leave their body, general people, their mouth and all other holes are open only. And generally the people live through mouth. That's what Prabhupada mentions in the next purport. But that's not the case in Kali Yuga. Most of the people, their soul lives through anus, मूलाधार. नरक की गति होती है. नीचे से जब सोल जाता है तो नरक की गति होती है. But general, all those pious people, at the most they may live. Mouth is open. So through different hole it goes. It may go through mouth also. The soul. So
Now, coming to Bhakti Yogi. Now, this is all Shukdev Goswami has explained here for the sake of all those satisfying the need of all other sages. But at the end, ultimately, Shukdev Goswami will tell that nahi asto anya shiva pantha vishaya samsprita vasudeva bhagavati bhakti yoga prayojita. Bhakti yoga yato bhavet. So ultimately, it is the most auspicious path amongst all these paths is Bhakti Yoga, because most auspicious destination is there. Which when Chaitanya Mahaprabhu is coming to his spiritual master and he's telling that I'm chanting, and when I'm chanting, I'm going mad. I'm chanting, dancing, I'm becoming mad, and my body is trembling constantly. The tears are flowing from my eyes. I'm trembling. What kind of things is this, oh my spiritual master? Please explain. And there, then Ishwar Puri tells, Bhalo Hailo. Very nice, my dear son, you achieved the highest perfection. There he mentions Krishna Vishayaka Prema Parama Purushartha Yara Age Trunatulya Chari Purushartha. कृष्ण विषय का प्रेम जो है वो परम पुरुषार्थ है. प्रेम पुमर्थो महान बोलते हैं ना. और 11 आगे तृणतुल्य चारी पुरुषार्थ. 4 पुरुषार्थ जो है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, like तृण, insignificant in front of कृष्ण प्रेम. पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंदामृत सिंधु. ये पंचम पुरुषार्थ जो है कृष्ण प्रेम, प्रेम आनंद सिंधु जो है, मोक्षादि आनंद यार न है एक बिंदु इनके आगे. मोक्षादि जो भी चर्चा होती है मोक्ष के बारे में, वो एक बिंदु के समान भी नहीं है. That's why he says, Bhala Haila, Paila Tumi, Parama Purushartha. Oh my dear son, it is nice that you have achieved Parama Purushartha. Rasovarjam, Rasopyasya Rasovarjam, Parama Drushtani Vartate. When one achieves that Parama Drushta, then one will not be interested in any mechanical yoga system. But in the modern yogis, whatever Kundalini yoga system was first introduced by some yogi in 1960. He was from Pakistan. He came to America, Western world, and he started Kundalini Jagrut Karna. And after that became so famous. But ultimately, the content of that, all the yoga system, ultimately they want to awaken for better sense gratification. So such kind of yoga is useless, where they are worse than what the Ashtanga yoga is very elevated, spiritual, what is mentioned in Bhagavatam. What they promote and propagate is completely based on sense gratification, how to do better sex life. That's all the goal of their so-called yoga system. And at the most, ज्यादा से ज्यादा अगर योग के बारे में चर्चा भी किए तो अंततः वो मायावाद में एंड होगा. निर्विशेषवाद और मायावाद के बारे में चर्चा करेंगे. जो श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में गए थे, was that शास्त्री राम मिश्रा. तो मिश्रा जो था, राम मिश्रा, अल्टीमेटली क्या, योगा स्टूडेंट. Ultimately what? Merging into the Brahman to become one with that Supreme. In what sense becoming one with that Supreme? To become God. While being in this material world, you enjoy, and at the end of the perfection of the yoga, you will merge into the Supreme.
everything is hodgepodge yoga system. And people who is on the level of sense gratification, naturally they appreciate and they get many followers, such Mayavadi. And what is the use of having a debate and conversation with such kind of Mayavadis? Wasting time. Prabhupada, as soon as he would have an opportunity to confront Mayavadi also, he would leave that place. He will prefer to leave. Many of the Madhva sannyasi and all those, they make it they may derive greater pride to sit with Mayavadi, debate, defeat, and afterward defeat, what happens? The Mayavadi continue practicing Mayavadi. Mayavadi मठ अभी भी है, चलता रहेगा, चल रहा है. Mayavadi Khandanam is one of the principal Chaitanya Mahaprabhu taken. But just by doing the Khandanam is not sufficient. Promoting and propagating Krishna consciousness. Prabhupada no but derived a lot of pleasure in defeating the wrong ideas based on in the name of science and all. He gave sufficient time also for that. Of course, he defeated Mayavad. He also defeated the false idea of sense gratification, scientific development for sense gratification, better sense gratification. But he was not much interested in wasting time to sit with Mayavadis and debate. Hardly we hear. To chant Hare Krishna and be happy. All those hippies to whom Prabhupada came to preach, many of them they were searching for the spirituality, and most of them they had idea of almost impersonalistic and Mayavadic idea before they even came in touch with Prabhupada. And most of them they thought that by taking the LSD and all, they will go high, and they will find themselves very close to spirituality or spiritual consciousness by going high by taking LSD. They were completely misled, by so-called yogis and Mayavadis, the hippie generation. What is hippie? Prabhupada is something extraordinary. Hippie means lower than human civilization, that kind of life. What is drugs? Take drugs and have an illicit sex. That is hippie life. And that hippie sits in yoga posture to awaken his kundali. What kundali he will if he is not come out of the first intoxication and the desire for sex? What he will do by awakening kundali at the most better sex life. That's all. And that's what they experience. Even by practicing this yoga, they experience that better way of sex life. But they're happy with that. Eating, meeting, sleeping, and defending. No any tinge of spirituality. And Srila Prabhupada gave them the essence directly. The Hare Krishna Mahamantra. The path which will take them beyond all the material realm. And very basic thing he told Prabhupada. First thing is for regulative principle. First, stop that intoxication. Stop that illicit affair. First thing first. Become first human to practice spirituality. And stop this nonsense Hatha yoga and this yoga system where no yam and niyam being told. Without yam and niyam, they directly do pranayam. Without and they're all misled by the so-called yogis. So that's why vehemently he opposed such kind of mechanical yoga system and offered the most pure path of bhakti yoga based on Srimad Bhagavatam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare.
श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की जय। Any comment? Video? हाँ बरोबर बरोबर प्रोटेक्ट इधर से सिखाना चाहिए। इधर अभी गए थे रामानुजा स्टैचू में, रामानुजा तो बड़ा शिखर है। ये बड़ा शिखर वहां से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। Energy, energy center, but don't connect it to bulb. You not get it. I get that means you can just put a bulb here and chant mantra. Untying, tying. Untie.